this is another aspect that I would like to highlight. It is not only the military funding and prosecution. Now the information wing, the information arm of the India of Hindustan is also works hands in glove with these terrorists and this Fitna al-Hindustan and Fitna al-Khawarij. آپ کو میں اس کی صرف چند مثالیں دیتا ہوں اینڈ یو بینگ ان میڈیا ول بی ایبل ٹو ریکگنائز اٹ ویری کوکلی. یہ فرسٹ ایگزامپل از آف میاں والی بیس اٹیک وچ از آن 4 November 2023. A day before, the Indian social media posts, tomorrow is a big day, so going to bed early. And then in the morning, it says good morning میاں والی. یہ آپ نے دیکھی ہوگی پہلے بھی. سو دیر از دی انفارمیشن پرانگ. اور پھر اوپر اس کا یہ کلپ دیکھیں جب وہ واقعہ ہوتا ہے میاں والی کا تو ہاؤ دی انڈین میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پلیز اپ اینڈ گلوریفائز دس ایکٹ آف ٹیررزم. چلائیے گا ذرا. And a news from neighboring Pakistan, which has reported yet another terror attack. Its Miawali training airbase was attacked by terrorists. Exclusive input coming in from Pakistan, where TJP has attacked PAF Miawali base. The TJP had entered the base and attacked and have damaged more than 40 fighter planes. Now, Pakistan is reeling under the spate of terror attacks. From Balochistan to Khyber Pakhtunkhwa and even Punjab, chaos has gripped the country of Pakistan. Pakistan, where Miawali air base was attacked. Now, آگے آپ یہ دیکھیں کہ 6 اکتوبر 2024 کو ہمارے چائنیز دوستوں کے اوپر کراچی میں اٹیک ہوتا ہے. اس سے پہلے انڈیا کا سوشل میڈیا کے جو ان کے را سے جڑے اکاؤنٹ ہیں, را افیلیٹڈ اکاؤنٹ ہیں, دے اسٹارٹ کلیمنگ بیکاز دے وہی وہاں سے پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں, وہیں سے آرڈرز مل رہے ہیں, وہیں سے کہا جا رہا ہے, وہیں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, تو وہ پہلے پوسٹ کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بگ ڈے ان نیکسٹ فیو آورس. اور پھر جیسے ہی ہوتا ہے تو دیر میڈیا اینڈ سوشل میڈیا اسٹارٹ سیلیبریٹنگ اٹ کہ جی ہم نے چائنیز کو ہٹ کر دیا کراچی میں. دین یو سو دیٹ سیم تھنگ ہیپننگ آن 11th March ان جعفر ایکسپریس, کہ جیسے ہی جعفر ایکسپریس ہوتا ہے اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کیپ این آئی آن پاکستان ٹوڈے اینڈ ٹمورو. پھر وہ کہتے ہیں دی روڈ ٹو پیس ان بلوچستان پاسز تھرو کشمیر. اور اس کے بعد جب ہوتا ہے تو دیر ہول میڈیا از سیلیبریٹنگ دس ایکٹ آف باربرزم, دس ہائی جیکنگ آف ٹرین. پوری دنیا اسے کنڈیم کر رہی ہے, اور انڈیا کا میڈیا, سوشل میڈیا اور وہاں کی پولیٹیکل ایلیٹ ایسے ہے جیسے وہاں پہ کوئی عید کا دن ہو گیا. یہ آپ کو جو نیکسس ہے آف دیر انفارمیشنل پرانگ نظر آ رہا ہے, سب کو دنیا کو نظر آ رہا ہے, ہی نہیں آ رہا کہ یہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کا ہندوستان سے جو گٹھ جوڑ ہے. فار اینی کامن سینس آپ سامنے رکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے. آگے جائیے گا. یہ خزدار کا واقعہ, اس میں بھی ابھی آپ اس لنکیج کو دیکھیے گا. نیکسٹ جائیں. صبح یہ واقعہ ہوتا ہے اینڈ ہاؤ دی انڈین میڈیا, آگے چلیے گا. یہ ذرا دیکھتے جائیے گا کہ ان کا میڈیا, سوشل میڈیا اس خزدار کے ہینیس کاورڈلی اٹیک پہ کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھیے گا. 7:58 AM, 8:05 AM, 8:07 AM. These are all Indian accounts جو کہ را اور ایفیلیٹڈ یہ لوگ ان کے لیے BLA کے لیے فتنہ الہندوستان کے لیے چلا رہے ہیں. 8:35, 8:45, they're all reporting دھماکہ ہو گیا, بچے ہو گئے, شہید ہو گئے, مر گئے. پھر تصویریں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ان کا الیکٹرانک میڈیا جوائن کر جاتا ہے. بلوچستان میں ملٹری اسکول بس پر حملہ ہوا ہے. حملے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی لوگ گھائل بتائے جا رہے ہیں. کوئٹہ کراچی ہائی وے پر ملٹری اسکول بس پر یہ اٹیک ہوا. بلوچستان کے خجدار قصبے کے پاس یہ اٹیک ہوا ہے. اس حملے میں 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے, اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے جب یہ دھماکہ ہوا اس کے بعد پورے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے اور ایمبولینسز جو ہیں
वो वहां पर जा रही थी ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, और जिस तरीके से हो रहा है ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तानी सेना का जो इस वक्त मोराल क्या होगा. An explosion has been reported targeting a Pakistan Army bus near Kuzda Zero Point in Balochistan, and we're also getting in reports of mass casualties. And local sources say that a bus that was leaving from the Kent region carrying Pakistani military personnel. सुन रहे हैं आप? ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को, जो उनको इस तरह खुशी से रिपोर्ट कर रहा है? और ये भी मैं आपको दिखा नहीं रहा, इसके बाद इनके आते हैं तज्जियाकार, इनके आते हैं रिटायर्ड फौजी, इनके आते हैं पॉलिटिशियंस, इनके आते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट, एंड दे आर थम्पिंग देयर चेस्ट. This is the same media, this is the same political elite that on the night of 6th and 7th, 40 innocent civilians died, including 22 women and children, and they are still claiming as if they have done a great deed. Never, I think, in the history of modern history, you have seen any nation, any media, any government celebrating killing of children and women the way they are celebrating. This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. Next चाहिए. ये one of the proxy of one of the arms of this fitna Hindustan. This is on 11th May. इसको देखिएगा ये क्या कह रहा है. They issued a press release. I have highlighted the important parts for your consideration. They say, Fitna al-Hindustan, what does it say? If we receive political, diplomatic and defense support from India. What is defense? Military support, equipment. फिर ये कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है. किस मुंह से कहते हैं आपका ताल्लुक नहीं है? नीचे पढ़े वो कहते हैं, we assure India to attack from the western border, कि आप जब escalation करेंगे, that if we assure India that if it makes the final decision to eliminate the state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from western border. We will become its, किसका? इंडिया का practical and military arm. 11 मई को ये रॉ इंडिया उनसे ये प्रेस रिलीज करवाता है. क्यों करवाता है? क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेट है वो डिटर नहीं हो रही इनसे. वो मिसाइल मारते हैं, वो ड्रोन भेजते हैं, वो हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का रिजॉल्व नहीं गिर रहा. उसकी आर्म फोर्सेस जो सी हैं वो सीना खोल के, सीना ठोक के खड़ी हैं. Because we made a promise, our ancestors, our forefathers made a promise that we will safeguard the territorial integrity, sovereignty and honor of Pakistan at all cost. तो वो इसको लगाते हैं कि तुम और ये कहो कि जी हम तुम्हारे साथ मिलके होंगे. तो वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ये 13 लाख की इंडियन आर्मी हमें कोर्स नहीं कर सकती, डिटर नहीं कर सकती, तो ये जो इनका फितना हिंदुस्तान है, इनकी इन प्रेस रिलीजों से, इन हरकतों से, इन बुज़दिलों से, इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हम क्या डिटर हो जाएंगे? हरगिज नहीं. नेवर एवर. नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा. दिस इज अनदर एंगल ऑफ द टेररिस्ट फेस्ट ऑफ दिस फितना हिंदुस्तान and their master Hindustan. सुनिएगा इनको. Map of Pakistan is going to be redrawn very soon. There'll be free Balochistan. Then the Taliban will also claim what is rightly theirs. The Durand line will be rewritten, and all will be left in Pakistan is going to be the state of Punjab in Pakistan. Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan and Sindh will all be free. 2025 Balochistan, Balochistan, Balochistan. that's what we want. Ye Balochistan. dil mange more. These all statements are recent. ये डेट्स आप देखते जाएं. दिस इज पोस्ट पहलगाम.
This is on 11th May that this retired general साहब जो हैं उनके, वो Balochistan, he is howling because they are frustrated. जो 10 मई को उनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि अब कुछ करो, हमने पाला हुआ है तुम लोगों को इतने अरसे से, फितना उल हिंदुस्तान, और चूंकि फौज के RFC के सामने आते हो तो मारे जाते हो, वो तुम्हें लाशों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जाओ बच्चों की बसों को ही जाके मारो, कुछ करो. बिकॉज दिस इज ऑल नॉट, ये कोई पुरानी नहीं मैं आपको दिखा रहा, ये मैं अब की दिखा रहा हूं. ये वो पहले 6 मई की, अब ये 11 मई को चीख रहा है बलोचिस्तान बैठ के. ये है वो नेक्सेस, ये है वो फितरा अल हिंदुस्तान. इसलिए हम कहते हैं इनका कोई बलोचियत से, पाकिस्तान से, किसी नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है. माय डियर, इनका ताल्लुक इनके साथ है. ये हैं इनके मास्टर्स, ये हैं इनके परपट्रेटर्स. दिस इज द ईवल फेस ऑफ दिस फितना अल हिंदुस्तान. सुनाइए. The BLA is not a ragtag force anymore. They are organized, sophisticated, and relentless. The Baloch Liberation Army, or the BLA, is leading the charge. They have been on an attacking spree. Baloch also added that the state ceremony of the independence government of Balochistan will take place soon. Baloch writer Mir Yar Baloch has claimed Balochistan's independence from Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में बलोच दूतावास खोलने की अनुमति मांगी गई है. Balochis have been more hopeful, have become more hopeful as far as India is concerned. We expect India to help with international human rights community and raise our voice. बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया. I am asking India in her own interest. We are your sons and daughters. Help us. Our leader, Dr. Allah Nazar, has said, please just give us the 93,000 guns and we are going to show them ourselves. खुला मांग रहा है, 93,000 गन दे दे, 93,000 गन दे. Who is the state sponsored terror here in this region? बताइएगा कौन है, नजर आ रहा है आपको? पूरी दुनिया देख रही है, और ड्रामा क्या करते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है. तो ये जो अपनी दहशतगर्दी से छुपने के लिए भी ये ड्रामा किया जाता है, क्योंकि अपने मुल्क में कर रहे हैं जुल्म. दे आर डूइंग कंटिन्यूस ऑपरेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स, अगेंस्ट द कश्मीरीज, अगेंस्ट द सिख्स, अगेंस्ट द माइनॉरिटीज. वो जो ऑपरेशन है, वो जो जुल्म है, उसका एक नेचुरल रिएक्शन है, उसका हल नहीं करना. पाकिस्तान में टेररिज्म करनी है, रीजन में टेररिज्म करनी है, और जब उसका हल नहीं करना, वो जो एक इंटरनल इशू है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कर रहा है. जब कोई उनका एविडेंस मांगे, वी हैव नो एविडेंस, नो वी विल नॉट गिव एविडेंस. उनके मुल्क के अंदर से सवालात आ रहे हैं, वहां से जो पूछ रहे हैं भाई ये क्या हुआ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर हो गया तो वहां पे मीडिया बंद कर दो, वहां पे सोशल मीडिया बंद कर दो, वहां पे सहाफियों को पकड़ के जेलों में डाल दो. इज दैट नॉट हैपनिंग ओवर देयर? पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ो, चाहे एक स्ट्रेटेजिक डाइवर्जन क्रिएट हो, कोई पूछे ना कि ये क्यों हुआ है. ये आगे जाइएगा. अब ये सुनिएगा, ये थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि इसकी तारीख भी है ना. ये सुने कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, इनकी जो होश है, अकल है, वो क्या है, इनकी बातें जरा सुनते जाए. कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में. आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए. कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए. आप पैसा दीजिए. पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे. ये कौन है जी? ये इनका सो कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है. Nobody in India is bothered, बल्कि इसको सेलिब्रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है. Is it not terrorism? What else is terrorism? This is what he's saying. Give money for this lakh, kill a major of Pakistani army, इतने पे लेफ्टिनेंट कर्नल को, इस पे कर्नल को, ब्रिगेडियर को, जनरल को.
Who is the state sponsor of terrorism in this region? Who is the epicenter of destabilization in this region? कोई शक है? Any doubt left?